तलची जोस्त पेठ छुक नचान वंत माल वंद कत पचान छी सोम्बरथ सामर्थ यति छी मचान वंत माल अन कत रोचान छी. The pit is staring at you, yet you remain oblivious. Tell me, my dear, how is your heart resting in peace? All the wealth and strength you gather, you will see go away. Tell me, my dear, how are you able to enjoy your feast? Talchi Zeus. Zeus is used for pit, abyss, patal. This could refer to, ये तो इसकी literal meaning हो गई, but this could refer to maybe grave, कब्र जिसमें इंसानों को डाला जाता है उनकी मौत के बाद, या फिर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में पिट यूज किया जाता है जहन्नुम के लिए भी. तो मे बी अलमदार इज हिंटिंग टुवर्ड्स दैट एज वेल. इन एनी केस तलची जोस्त पेट छुक नचान. What does पेट छुक नचान mean? Nacan is a very interesting word. Natsun is used for dance in Kashmiri, but it's also used for wandering around. But what is common between both of these, dancing and wandering around? इन दोनों में कॉमन है केयरफ्री होना, बेफिक्र होना, oblivious होना. बिना फिक्र के होना भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. जैसे जन्नत में हमसे कहा गया है कि कोई फिक्र नहीं होगी, लेकिन बेफिक्र होना नेगेटिव भी हो सकता है. दांध हूँ बेफिक्र. तो नचुन व्हेन यूज्ड विद ए पॉजिटिव कंटेक्स्ट हैज़ ए पॉजिटिव कॉनोटेशन. नचुन तो गिंदुन. एंड it has negative connotation when it is used in a negative context. नचान दारबदार. तो ये जो लाइन हमने पहली देखी, तलची जोस्त पेट छुक नचान, इसमें द कॉनोटेशन सीम टू बी नेगेटिव, लेकिन उसके बावजूद दोनों मीनिंग्स यहाँ पे मर्ज होती है. यू हैव ए पिट स्टेयरिंग एट यू एंड यू आर डांसिंग इन जॉय, सैशिएटेड. व्हाइल यू आर डांसिंग इज शोइंग दैट यू आर एक्चुअली केयर फ्री. आपका जॉयस होना भी आपका केयरलेस होना, कैरलेस होना, ऑब्लिवियस होना दिखाता है. तलची जोश पेटचुक नचान को ऐसे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि एज इफ अलमदार इज इन्फॉर्मिंग अस, ओ डियर यू आर डांसिंग ऑन व्हाट इज एक्चुअली ए पिट. लेकिन ये जो मीनिंग है इट वोंट बी अलाउड बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट लाइन, क्योंकि उस लाइन में अलमदार फरमाते हैं वंत माल वंद कत पचान छी. हाउ डज योर हार्ट इवन अलाउ दिस? ये दिल तुम्हारा कैसे ऐसे शांत रह सकता है? दिस हैज द फीलिंग ऑफ चमशी मगज डेल में चमशी मगज खराब गई में चे नार शी लोग में गर चुका रील वुचान इंस्टाग्रामस पे वंद कत पचान छी. This line would make sense only when the man is aware of the pit and then chooses to remain oblivious. Hudal lil muttaqin, guidance for those who have taqwa. Guidance is for those that wish to be guided. This initial seeding is called adab. तो बिना अदब के इल्म नहीं हो सकता. वैसे ये दूसरी लाइन कैसे पहली लाइन की मीनिंग को लिमिट करती है, इसे कहते हैं कंटेक्स्ट में किसी भी चीज को समझना. तल चीज जोस पेट चुक नचान वंत माल वंद कत पचान छी. सोम्बरथ सामर्थ यति छी मचान. सामर्थ हिंदी में भी इस्तेमाल होता है स्ट्रेंथ के लिए. सम्राट भी आपने सुना होगा, वो भी यहीं से आया है, एम्पायर के लिए यूज किया जाता है. कश्मीरी में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकत के लिए, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए. ये जो स्ट्रेंथ है, वेल्थ है. तो अलमदार फरमा रहे हैं ये जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये जो तुम्हारी वेल्थ है, ये जो तुम्हारी, ये फिजिकल भी हो सकती है ना, जिस्मानी है, हेल्थ के बारे में भी बात हो सकती है. ये मचान, ये यही आपकी आंखों के सामने सहम जाता है, यहीं रह जाता है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है बस इंसान. वंत माल अन कहते रोचान छी. शफी सोक साहब इसको ट्रांसलेट करते हैं एज टेल मी ओ डियर हाउ यू एंजॉय योर फूड. सो विदाउट गोइंग इनटू द लिटरल मीनिंग ऑफ रोचान, जो मैं खुद भी नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, और ग्रेयरसन की डिक्शनरी में भी मुझे इस लफ्ज़ को ढूंढने में नाकामी ही मिली. So without going into the literal meaning, we can still understand the meaning from the context and the parallel of the first two lines. How are you able to enjoy this food? कैसे? ये आपके हलक से नीचे उतरता कैसे है?
You see how you leave everything behind, yet you fall in this trap. So all that you gather, you leave behind here. Tell me, oh dear, how you enjoy your food. Yeah, where all the wealth and strength you gather, you see go away. Tell me, my dear, how are you able to enjoy your feast? Talchi Jus to Petchuk Natsan, one to Mali one the Ketipachanchi. Sombret Samarth, Yeti Shui Matsan, one to Mali and the Ketirochanchi. Alamdar हमसे कह रहे हैं he is here trying to take our mind towards the greater realities of life, the higher principles. अक्सर क्या होता है हमारे साथ, we end up jeopardizing the higher ideals for the lower, and this is what he is trying to bring back to our notice. Seriously, do you really have time for this? How can you rest in peace with all that is at stake? This is the feeling which it invokes. It's ishina sharam devan. This is also a consistent theme throughout Quran, reminding people of what is to come, reminding them of higher ideals. This brings us to a very important and crucial point of discussion, the discussion on hierarchies. Knowing the hierarchy of value, knowing the hierarchy of people, knowing their priorities, and that in itself is what is called justice, placing things where they should be. And its occurrence in the society would make the society a just society. The contrast between the pit staring at you and you remaining oblivious, this suggests a potential neglect of deeper, more meaningful aspects of life in favor of what is fleeting, in favor of external pursuits like wealth and strength. Let's look at the broader principle of hierarchy. In this context, the lesson could involve a consideration of one's priorities and a reminder to seek value and contentment on things that are lasting. And this knowledge of hierarchy is directly linked to justice. Hierarchy is placing things in correct order, and justice is placing things where they should be. Now, this lack of knowledge of hierarchies of values is actually what leads to injustices in one's personal life and injustice in society as a whole. Vandamale Vandakaitapatsanchi.